Hello, Jodulok. Welcome for the first video of medicine revision. The first chapter that is connected to tissue disorders. As I said in the exam, you would get 1 to 2 questions from this. We'll be discussing 6 diseases. Same thing as we had done with pathology. I'll go chapter by chapter. You see it, revise it yourself afterwards, and just move on to the next chapter. SLE, it is a systemic lupus erythematosus, type 3 hypersensitivity reactions, autoimmune, more common in females, 1 is to 9 ratio, HLA-DR 2 and 3. Okay. And what happens in this, that there is a hypocomplementemia happens in the patient because of which the apoptotic bodies, they're not being removed because the WBCs are not able to reach to the place. And therefore, these apoptotic bodies, they start behaving like an antigen and our immune system is making antibody against it. And then this antigen antibody complex goes all around in the body at different places, causing damage. Prognosis of SLE, very important, depends upon the number of X chromosome. More the number of X chromosome, worse is the prognosis. The clinical features, we will be discussing the entire SLE with a mnemonic, as I told you before, pass brain model, where P is photosensitivity associated with anti-Rho antibody. A is alopecia, which you have to remember is non-scarring. S is serositis and synovitis. Serositis means serous layers inflammation. That is your pericarditis and pleuritis. Pleuritis being the most common pleural manifestation. Okay. Now, one more thing by which you can differentiate is the chest pain. Now, chest pain associated with breathing, probably it is pleuritis, and chest pain without any association with breathing is pericarditis. As I said before, the synovitis is a new thing which we are talking in SLE. Earlier it was arthritis. Why we are calling it as sinusitis right now? Because there is no joint destruction as such. There is no erosion. It can be bilateral. It can be, unilateral. It can be symmetric. It can be asymmetric. But then no erosion will be seen. And that is what differentiates this SLE joint involvement than many other joint problems, very likely like rheumatoid arthritis. Then this is PASS, photosensitivity, alopecia, sinusitis, and cerovitis. And then comes your brain, blood. But we know pancytopenia will be seen. Then after that, renal findings. In the renal findings, you have lupus nephritis, which can lead to renal failure. There can be so much of damage that kidney can fail. Obviously, we all know that any kind of renal damage can present to us with proteinuria, hematuria, and the normal GFR is 125. But we say that this is end-stage renal disease when the GFR is going below 15. Okay, G5 in renal system. I hope you remember the stages of CKD we discussed. Then there are 6 classes of lesions which are there with the patients of SLE in the kidney. And first is minimal change disease, then it is mesengium which is getting infected, then this is focal, less than 50% involvement, diffuse, more than 50% involvement. Then finally comes the basement membrane involvement. We call it as membranous lupus nephritis. And finally, fibrosis will occur, leading to hardening of the glomerulus, lupus sclerosing nephritis. It is associated with wire loop lesions. Which form of lesion? Type 4, more commonly. Okay. Then BR is done. Then A, it is ANA, which is the most sensitive antibody for SLE. And please, I said this in the class also, I'm repeating it again. ANA does not guarantee SLE. ANA is just a sensitive antibody for an autoimmune disorder. If ANA is positive, that means there is some or the other autoimmune disorder happening in the patient. It does not guarantees anything. Then the antibodies, more sensitive antibody, ANA, more specific antibody, it is most sensitive antibody, it is ANA, most specific S for S Smith. दोनों पूछे हैं तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ड्रग इंड्यूस हिस्टोन, विच ड्रग्स, शिफ्ट ड्रग्स, नियोनेटल मैंने बोला था रोला, साइकोसिस पी फॉर पी, राइबोसोमल पी, cerebritis, neuronal antibody will be seen or anti-glutamate antibody. Photosensitivity रो एंड रिकरेंट अबॉर्शन में तुमको पता ही है, बाकी जो बचा वो सब रिकरेंट अबॉर्शन, कार्डियोलिपिन, फॉस्फोलिपिड, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन. Neurological findings, again, psychosis and cerebritis, ribosomal P and neuronal. Malar rash, yaad rakhna, malar rash, we all know what is malar rash, but the other name of malar rash is what? Acute cutaneous lupus.
Then oral ulcers, they are numerous, aphthous but painless. Discoid rash, it's a scarring rash. क्रॉनिक है ये, टाइम हो गया इसको, स्कार हुआ है इसके अंदर. ठीक है. सो chronic cutaneous lupus, which is discoid rash. For a patient of SLE, four or plus criteria will be seen, जो भी अपन ने देखा, and these four criteria should be containing both clinical and immunological criteria. The most common cause of death in the patients of SLE in the early phase are infections and late phase atherosclerosis. Treatment बेटा तुमको पता है, steroids. इनिशियली लो डोज चलाएंगे, बाद में हाई डोज हो जाएगा, साइक्लोफॉस्फेमाइड को ऐड कर देंगे फॉर 6 मंथ्स. प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस इज HCQ, बट एक क्वेश्चन देखा था कि HCQ कभी और दे सकते हैं कि कैन वी स्टार्ट HCQ इन एवरी पेशेंट? यस, HCQ इज स्टार्टेड इन एवरी पेशेंट, बट विद प्रेगनेंसी इट बिकम्स ड्रग ऑफ चॉइस. ठीक है. एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी which can be used in SLE is belimumab. This is your SLE. Then RA, this is the most common connective tissue disorder. It's again an autoimmune disease, और RA में याद रखना छोटू, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी और HLA भी 4 है, तो RA के साथ सब 4. ठीक है. नाउ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक साइन फॉर एनी रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट वुड बी मॉर्निंग स्टिफनेस विच रिड्यूसेस विद फिजिकल एक्टिविटी. किसी भी ऑटोइम्यून डिजीज में मैंने आपको बताया था इन द क्लासेस, बेटा फीमेल्स, इफ इट्स एन ऑटोइम्यून डिजीज, फीमेल विल बी मोर कॉमनली अफेक्टेड. ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, स्टेरॉइड्स. कॉमन कॉज पता नहीं, इडियोपैथिक होता है, प्लस बिकॉज इट्स एन ऑटोइम्यून डिजीज, सो इट विल प्राइमरीली बी damaging one particular site, and that is what we'll be using in the name, but it can involve anything. So RA के अंदर rheumatoid arthritis, so joint involvement is primary, but then extra articular manifestations can also be seen. And what is the most common extra articular manifestation? Rheumatoid nodule. Okay, on the extensor surface. It can involve any organ. अपने ने 3 सिंड्रोम याद किए थे छोटू, कैपलान सिंड्रोम, फेल्टी सिंड्रोम, इरास्मस. कैपलान के अंदर क्या था? आरए विद न्यूमोकोनियोसिस. फेल्टी में क्या था? आरए विद मैसिव स्प्लीनोमेगेली प्लस न्यूट्रोपीनिया. एंड इरास्मस में आरए विद स्क्लेरोडर्मा. ठीक है. बट जो इसका जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस विल ऑलवेज बी बायलेटरल, इट विल ऑलवेज बी सिमेट्रिकल. एसएलई में ऐसा नहीं था. एसएलई में साइनोवाइटिस थी बिकॉज देयर वाज नो जॉइंट डिस्ट्रक्शन. यहां पे तुमको जॉइंट डिस्ट्रक्शन मिलेगा, एंड दैट जॉइंट डिस्ट्रक्शन और जॉइंट इरोजन इज कॉल्ड एज स्पैननेस. आई होप यू रिमेंबर. There can be different forms of RA which can be there. The hallmark feature of RA is flexor tenosynovitis. तो आप देखो, फ्लेक्शन भी जा रहा है, टेंडन भी जा रहा है, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है. सो ऑल दिस कैन बी सीन. ये अपने ने याद किया ही था. स्वान नेक डिफॉर्मिटी के लिए क्या याद कराया था? फेस, फ्लेक्शन एट डिप, एक्सटेंशन एट पिप, स्वान नेक. उल्टा कर दो, एक्सटेंशन एट डिप, फ्लेक्शन एट पिप, बॉटनेस. मोस्ट कॉमन जॉइंट इन्वॉल्व MCP joint, axial skeletal joint भी involved होते हैं, but most common is MCP. Whereas the joint which is never involved is DIP. What do we mean? That the destruction inside the joint which you see in rheumatoid arthritis will never be seen in the DIP joint. Other things which can be seen are mallet fingers, headline deformity. On the X-ray, what are you seeing? Erosion, that is pannus. आपने देखा बेटा, normal joint में you always find it clear. Maximum amount of cells which you can find inside a synovial fluid is 200, but यहाँ पे it will be more than 5,000. बहुत सारे cells हो जाते हैं. Too much of cells will be there, and see, all the bones and everything is getting destructed. The articular surfaces are gone. So this is pannus. When you take the needle here and you aspirate the joint fluid, आपको क्या मिलेगा? बहुत सारे cells. Exudative fluiditis. क्राइटेरिया, यूलार क्राइटेरिया. सीरोलॉजी में याद रखना बेटा, मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी इज CCP. RA फैक्टर इज नॉट डायग्नोस्टिक, इट इज जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट. इनिशियल पार्ट में ESR CRP कुड बी नॉर्मल, लेटर ये बढ़ जाते हैं. ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. ट्रीटमेंट, डिमार्ड थेरेपी, ट्रिपल थेरेपी, मीथोट्रेक्सेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस. इसका प्रॉब्लम GI साइड इफेक्ट्स. You can give this drug eculizumab. This is C5 inhibitor, because once the WBCs are reaching there, for taking a WBC to a site, you require chemoattractant. And what is the best chemoattractant you have? C5a. This eculizumab inhibits C5. So therefore, this is the best chemo. This is a drug which you can use. This is the monoclonal antibody which can inhibit C5. Your WBC will not reach to the joint. The destruction can be slowed down. Intra-articular injection of steroids can also be used. They do not slow down the progression, but it's a short-term relief they will give. And the first oral biological used for RA was tofacitinib. तो या कंफ्यूज नहीं होना, बेलीमुमैब SLE के लिए, tofacitinib for RA.
Scleroderma, again an autoimmune disease, so more common seen in females. It's a disease in which the antibodies are damaging the blood vessel intimal layer and causing blood vessel thickening. There's a lot of collagen which is coming around the vessels. And because the first thing we see is the skin. So if the blood vessel which are giving the blood to the skin, if they get fibrosed, obviously skin cells will die and you will see fibrosis. So therefore the name is scleroderma. But ऐसा नहीं है that this is only damaging the skin. No. There is a type of scleroderma which only is against the blood vessels of the skin, and that is called as localized scleroderma, where we see which lesion? Morphia. Only skin involvement. But there could be systemic scleroderma which can be limited to a certain place or systemic to everywhere. Limited के लिए क्या याद कराया था छोटू? Crest. और एक ही बात याद रखो तुम इसके अंदर, the antibody is anti-centromeric and the most common feature for limited scleroderma is esophageal dysmotility. For extensive यही याद रखना, एंटी टोपोमरेज एंटीबॉडी, SCL70 एंटीबॉडी, ये तो याद रह जाएगा, ये याद कर लेना, थोड़ा बहुत पढ़ लो. एंटी टोपोमरेज एंटीबॉडी एंड एंटी SCL एंटीबॉडी, ये याद रखो. एंड मोस्ट कॉमन इज रेनॉल्ड फिनोमिनन. And the most common cause of death in the patients of scleroderma is interstitial lung disease. नहीं दिया हुआ हो तो pulmonary artery hypertension. बाकी कुछ नहीं है. ट्रीटमेंट में क्या है? स्टेरॉइड्स. तो कोई टेंशन ही नहीं है छोटू अपने को. दिस इज स्क्लेरोडर्मा. देन गाउट. बहुत बार आता है, देखो डबल स्टार बनाया मैंने, ये आता है. अब आएगा तुम्हारे एग्जाम में. अब ये तुमको बताया अलग अलग, ऑर्थोपेडिक्स में भी बता दिया, बायोकेमिस्ट्री में भी बता दिया. तो जब मैं पूछूंगा कुछ आया था, बोलोगे नहीं कुछ नहीं आया, तेरे पढ़ाई में से कुछ नहीं आया भाई. लेकिन कोई बात नहीं, मैं रिवाइज करा देता हूँ. गाउट, इट्स अ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस. इसमें मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स विल गो एंड डिपॉजिट मोर कॉमनली इन द एमटीपी जॉइंट. पाइरों में हो रही है. ठीक है, एमटीपी जॉइंट. अब व्हाई this crystal can cause destruction of the joint? Because this crystal is negatively charged. So because this crystal is negatively charged, so it can activate the complement system, will call WBCs inside. अब WBC पहुंच गए यहाँ पे अंदर. एंड वंस द WBC रीचेज, बेटा वो क्या करेंगे? वो तो दे और फाइटर्स, उनको तो करना है. सो दे विल फाइट एंड दे विल डिस्ट्रक्ट. ओके. गाउट कैन बी एक्यूट क्रॉनिक. एक्यूट गाउट, मोस्ट कॉमन जॉइंट एमटीपी अपन बात कर चुके हैं. अदर जॉइंट्स कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व. मोस्ट कॉमन इज एमटीपी. एंड भाई साहब, monosodium urate crystal deposited in any joint, gout it is. But if it is calcium pyrophosphate, then it is pseudo gout. So P for pseudo gout and pyrophosphate crystal, PP. डिफरेंशिएट कैसे करेंगे गाउट स्यूडो गाउट में? तुमको पता ही है बेटा. बाय रेफ्रिजरेंट पॉजिटिव स्यूडो गाउट, बाय रेफ्रिजरेंट नेगेटिव गाउट. ये सब तो ठीक है. पोडोग्रा, दिस इज द क्लिनिकल फीचर वेयर ऑल द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन विल बी सीन. और बेटा ये अपन ने बात किया ही था, टॉफी होंगी, एल्पेनलीबे, एक्लेयर्स, ऑल दैट. सो व्हाट आर दीज? These are subperiosteal deposition of uric acid. Subperiosteal. ठीक है, इनको हम टॉफाई बोलते हैं. एंड बिकॉज देर इज सो मच ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द ब्लड, तो obviously it can deposit in the kidney and can cause to kidney stones. कुछ नहीं, जॉइंट एस्पिरेशन इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. यहाँ पे भी तुमको बहुत सारे सेल्स मिलेंगे, बट दे विल बी. गाउट में क्या होता है बेटा? दे आर नेगेटिवली बायरेफ्रिंजेंट. स्यूडो गाउट में दे आर पॉजिटिवली बायरेफ्रिंजेंट. यही एक तरीका है डिफरेंशिएट करने का. 24 hour uric acid evaluation obviously in the start of the disease can be normal, बाद में बढ़ जाएगा. यूरिन माइक्रोस्कोप में you will find crystals. एक्सरे पे मार्टेल साइन. What is मार्टेल साइन? ये this destruction is the Martel sign. So you'll find Martel signs, which is erosion with sclerotic margins, and drug याद रखने के लिए बोली थी colchicine for acute gout treatment. Chronic gout, increase the levels of uric acid, या तो ओवर प्रोडक्शन की वजह से अंडर एक्सक्रीशन. ओवर प्रोडक्शन, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस? एलोपिरिनॉल. नहीं दिया है तो फेबुक्सोस्टैट. अंडर एक्सक्रीशन, डायरेटिक्स दो, प्रोबेनासिड दो. बेटर इज प्रोबेनासिड. दैट्स इट. Then Sjogren syndrome, second most common connective tissue disorder. What is the first most common connective tissue disorder, Choto? RA. Second most common is Sjogren syndrome. This is HLA-DR3 associated. It can be primary, secondary. Primary किसी को पता नहीं. Secondary associated with some other autoimmune disease. And most common autoimmune disease associated with Sjogren is RA. RA, इसमें Sjogren में क्या होता है? सब सूख जाता है बेटा. सब, everything dry. Sicca syndrome. If eye involvement is seen with it, keratoconjunctivitis sicca. What is the antibody? Rolla. What is the treatment? अब सूख गया है तो गीला करेंगे बेटा. Hydration.
आंख सूख गई है तो आई ड्रॉप्स डाल दीजिए। एंड स्टेरॉइड्स बिकॉज इट्स एन ऑटोइम्यून डिजीज। एंटीबॉडी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये याद रखना। मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, छोटो, एंटीबॉडी आती है इसकी बस, make anti-U1 RNP antibody. That is it. In mixed connective tissue autoimmune disorder, you find an ANA positive and RA factor also. अब RA factor देखते ही तुम्हारी तो तितली उड़ेंगी। RA factor rheumatoid arthritis जरूरी नहीं है, ठीक है। दिस कैन बी पॉजिटिव हियर, RA factor जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बट इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जस्ट सेंसिटिव थिंग कि हाँ भाई ठीक है, there might be joint involvement. But what is the antibody? You have to be sure of MCDD, anti-U1 RNP antibody. In the connective tissue disorders, the first thing is with every disease, you should know the antibody association and then things become simple. So this is the revision video for type chapter number 1. I'll see you in the next. अच्छे से पढ़ो, बढ़िया होगा। Bye bye.